ओके, सबसे पहले आप सभी को शुभ संध्या और मेरा बहुत बहुत नमस्कार। दिवाली की पूर्व संध्या पर आप सभी का स्वागत है। स्पेशली आज के हमारे स्मार्ट लीडर एज ए स्मार्ट गेस्ट लॉयन दीपक बुरानी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो स्मार्ट टॉक विद स्मार्ट लीडर्स में, जिसे हमने स्टार्ट किया है स्मार्ट टॉक विद स्मार्ट लीडर टू मेक अ स्मार्ट सोसाइटी, कि हम लॉयनिज्म के साथ में जुड़ करके कैसे अपनी सोसाइटी पे अंदर और ज्यादा स्मार्टनेस लेकर के आ सकते हैं, ह्यूमैनिटी के अंदर और ज्यादा स्मार्टनेस लेकर के आ सकते हैं। क्योंकि स्मार्टनेस का मतलब सिर्फ वो स्मार्टनेस एक वर्ड नहीं होता है, एक फीलिंग होती है स्मार्टनेस, कि आप स्मार्टफुली स्किल से कैसे किसी के लिए बेस्ट कर सकते हैं। तो बस इसी थीम के ऊपर हम लोगों ने अपना ये छोटा सा शो स्टार्ट किया है, जहां पर मैं रीना अग्रवाल, प्रेसिडेंट लॉयंस क्लब ऑफ पाम बीच ओशियानिक, और मेरे साथ में इस प्रोग्राम को को होस्ट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ लॉयंस क्लब सेंटेनरी स्टील मार्केट के प्रेसिडेंट लॉयन श्रीनिवासन सर। तो लॉयन श्रीनिवासन सर का भी बहुत बहुत स्वागत है और हम लोग अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी दीपक सर का एक ऑफिशियल इंट्रोडक्शन श्रीनिवासन सर हम सभी के सामने रखेंगे, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट ये जानना है कि ऑफिशियली दीपक बुरानी सर किस पोस्ट पर काम कर रहे हैं लॉयनिज्म में, और उन्होंने लीडरशिप के कितने मुकाम पार कर लिए हैं यहाँ तक पहुंचते पहुंचते। श्रीनिवासन सर। Thank you very much, Reena ji, and I welcome our dynamic leader, Lion Deepak Bhurani, for our smart talk with smart leaders. Because उनको क्या है ना, smart talk भी करता है, smart leader भी है. So this title is, suiting to the T for him. That's why I had a great pleasure in inviting him. Now, let me first introduce Deepak Bhurani. For that, so that people who are hearing will know more, because tomorrow, when it is circulated in the YouTube, there will be many non-lions who will be also listening to this. Now, Deepak Bhurani was a member of Thane Kopri since 1989, and he has been, he was in the club secretary as 1992-93 and as a club president in 96-97. In both the occasions, he has represented district at multiple, and Lion Deepak has won multiple quiz contests in 96-97 and also organized very successful zone social and region conference during his respective tenures. He was also held several committees at the district level and excelled in each one of them. It was a special liking for Lions Quest program, which I have been with him for the last 2 years. And today, if I'm doing something, I have learned a lot of things from him. And that is what I am implementing for our Lions Quest implementation now. He has done his workshops, implementation for the students, and also the awareness programs for Lions Quest has a society. And twice he was published our awareness booklets for Lions Quest. And today you will be surprised that my booklet also repeats him, because I don't change anything, because he has put in so much knowledge in that. I don't feel like changing anything of that, except the talk of the governor and the vice governor in the first 3-4 pages. Of course, now he organized the 2 published awareness seminars. He was also a cabinet treasurer in 2018-19. He excelled in all responsibilities which was given to him in arranging managing several district events. Now, this year, Lion Deepak has responsible for membership development as a district coordinator, global membership team. Despite pandemic situation, more than 325 members have already joined in Lions organization in our district in the past 4 months. And you must say, with a good command over English and Hindi, Lion Deepak is a good orator and also is a presenter. He has handled many Lions program as a master of ceremonies, and he has excelled in each one of them. Lion Deepak Bhurani has also recognized with the appreciation of the club, district, multiple and international levels. Of course, now going down to his studious level, he was a very studious student, and he was a first ranker in the school also. He was meticulously organized individual, A graduate, a commerce and legal law. Now, besides this, he belongs to a very diploma in management studies also he has done. That is why he's handling everything. Even the Lions program is beautifully organized by him. Deepak runs a business in chemicals,
and I think it's import and export from Bombay. And his organization recently celebrated a golden jubilee. Now, as far as this family is concerned, Deepak believes in giving back to the society through his generous support. And his wife is, or I would say, Ardhangani, Mrs. Komal, she is also a Lion member, and his daughter and his sons are both well educated and decently placed. I mean, I would definitely in this talk, I would like to listen to his daughter's achievements, special achievements during this pandemic zone. Thank you very much, sir. With this, I am presenting our dynamic, determined, dedicated, and innovative Lion President, Lion Deepak Bhurani, sir. Welcome. Thank you. Thank you very much, Lion SHRINIWASAN. Thank you to Lion Reena as well for the brief that you have provided, and SHRINIWASAN for the introduction. It was sweet bells in the ears listening to you today about myself. Thank you. Yeah. Let me, I mean, first I would really like to know when you joined Lionism. Because I personally know, but then from you, I want to hear when you joined Lionism, why you joined Lionism, and what is that which has attracted you in Lionism? I joined Lionism in the year 1989. So it's already 31 years. The period was October 1989. One of my neighbor friend, he was already a Lion, and he invited me to a couple of meetings in the club where he was associated, the club being Lions Club of Thane Kopri. The two meetings which I attended were so very well organized in the club. They were very informative. There were talks by knowledgeable people. In one case, it was a doctor. In another case, it was another very prominent personality who was speaking on the subject. That inspired me to join the organization because I felt there was so much to learn from the organization, the way the programs were arranged. I met the kind of people who happened to be members of Lions Club of Thane Kopri. Then I found myself very comfortable with them. And that's when I decided to join the organization. So since 1989, October, I have been member of Lions Club of Thane Kopri. I still continue to be their member. That's how the organization was introduced to me, and I became part of it. The most surprise, I mean, the most attractive thing is that you have continued in the same club for the last 31 years. That is something. That is something which is very admirable and which is very great. That is what something is which is outstanding in your attitude. That's all. Srini, as I always call you Srini, I feel more comfortable calling you Srini. Yes, yes. I hope you don't mind. Yes, you can continue. Srini, you see, we consider Lions as an extended family. And when you join a family, you don't change that. I must tell you that when I joined the organization, I was living in Thane. That is why I joined Lions Club of Thane Kopri. For over past 8 years, I have been staying at Ghatkopar. I've shifted my house. Now, even after shifting, I continue to be the member in the same club because the 22-23 years I spent there until I moved to Ghatkopar, I have created a kind of a bond with several members. And Lions Club of Thane Kopri is a mine of kind of excellent membership, talented membership, versatile membership. Many of them are a kind of an institution in themselves. And with such a fantastic membership that our club has, obviously, I prefer to be there with the kind of bond and with the kind of connections that have been established over the years. And I very distinctly remember that as a guest of honor, I had come to your club to give a lecture some time back. And that is where, the interaction with the people was so fantastic that, Thane Kopri has always been very close to my heart. Even now with the Lions Quest taken up, I think he's one of the clubs who continuously year after year supports the Lions Quest. I think it will be worth mentioning for me that Lions Club of Thane Kopri was the first club to support Lions Quest program way back in 92-93.
That was the time when Lions Quest program came to India. It was in a completely different format, much different format compared to what we see today. That time, it was a program when it came from Europe. It had that Western touch. In fact, you know, Lion Omi Arora ji has been dedicatedly involved with Lions Quest program. And it was because of him that the then president, Lion Arvind Sule, and I was the secretary in that year, we got attached to Lions Quest program. Right from that time, I have been a volunteer for Lions Quest program until I got an opportunity to serve as a district chairperson for Lions Quest for quite a few years. And thereafter, I'm happy that the mantle has passed on to a very eligible and very innovative, dedicated person in Srinivasan. Rini, you are doing fantastic work in as far as Lions Quest is concerned. Yes, exactly. It will be worth mentioning here that Lions Quest is a program which helps to develop the adolescents and the senior children to adopt positive approach in life. It's a very detailed program, an organized program, which is systematically parted to the students to learn things which help them for their lifetime. It's a program, one of the best programs that Lions organization is implementing for young generation. And I am really, I feel myself privileged to be associated with this program ever since it came to India. I would like to mention here that the Lions Quest implementation has been started by Reena Madam. She has got one group of 20 students have been completed about 3 days back, and the second group of the 25 started immediately. So this is the 2 batches which she has started, you know, online, completely online. And after that, there have been so many people who are asking, and they have come. They wanted to come and see and sit in that online and see how it is conducted. So they are also morely interested. Very good. And I'm extremely thankful to Reena for giving a start to this implementation program, which is the most important thing. Thanks to me, क्योंकि यहाँ पर थैंक यू कहने जैसा कुछ काम ही नहीं है, बात ही नहीं है। मैंने कुछ बहुत बड़ा काम नहीं किया है। हम लोग सब वही कर रहे हैं जो करने के लिए हम लोग यहाँ पर सब साथ में इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि जितना बेस्ट हम लोग दे सकते हैं सोसाइटी को, अपनी तरफ से देने की कोशिश करते हैं। क्या है हमारे पास में, बस वही कुछ जानना जरूरी है कि हम क्या मैक्सिमम दे सकते हैं। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा रीना जी। हम जब लायंस संस्था को ज्वाइन करते हैं तो हम यहाँ पर सिर्फ वॉलंटियर हैं, और वॉलंटियर का काम ये होता है कि वो समाज सेवा के लिए, समाज की जरूरतों के लिए वो सारा काम कर दिखाए जिसकी समाज को आवश्यकता है, और यही लायंस करते आ रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं वेयर देयर इज अ नीड देयर इज अ लायन। एग्जैक्टली हमारा संस्था का जैसे मोटो है वी सर्व, और इस साल हमारे जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं उनका तो स्लोगन बहुत ही सुंदर स्लोगन है, ह्यूमंस फॉर ह्यूमैनिटी। बिल्कुल। तो लायंस जो संसार भर के अंदर काम कर रहे हैं, आज करीब 14 लाख लायंस करीब 210 देशों के अंदर 48,000 से ज्यादा क्लब्स के अंदर जो काम कर रहे हैं, जिसमें बहुत प्रकार के काम समाज की सेवा के हिसाब से किए जा रहे हैं। मैं आपके ध्यान पर एक बात लाना चाहूँगा। पेंडेमिक के दौरान, अपार्ट फ्रॉम पेंडेमिक की तकलीफें, जो निसर्ग तूफान आया था, हमारे मुंबई शहर को जैसे एक तरह से छू कर चला गया। यहाँ कुछ तबाही नहीं हुई, लेकिन हमारे आस पड़ोस के इलाकों में, खास करके अलीबाग और उसके नेबरहुड एरियाज के अंदर बहुत भयंकर नुकसान हुआ, और इस दौरान लायंस ने वहाँ पर बहुत ही सुंदर कार्य किया है। हमारी इंटरनेशनल संस्था के द्वारा उस एरिया के लिए एक विशेष प्रकार का ग्रांट दिया गया, $10,000 का ग्रांट बहुत ही जल्दी वहाँ के लिए दिया गया, और उस ग्रांट के द्वारा हमारे डिस्ट्रिक्ट की तरफ से फुल यूटिलाइजेशन की गई है। तो इस तरह का बहुत ही सुंदर कार्य हमारे लायंस के द्वारा किया जा रहा है। ये तो एक छोटा सा मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि किस प्रकार का काम और किस तेजी के साथ हमारे लायंस करते हैं। चलिए सर, हम इस बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपसे, क्योंकि आज आप जिस पोस्ट पर हैं लॉयनिज्म में, वहां पर मैक्सिमम मेंबर्स मींस मैक्सिमम पर्संस को लॉयनिज्म में कनेक्ट करने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है।
तो क्या हम लोग, मतलब अगर मान लीजिए मैं एक लॉयन नहीं हूँ, मैं एक कॉमन पर्सन हूँ, तो कैसे मुझे कनेक्ट कर सकते हैं आप लोग लॉयनिज्म में, या मैं कैसे जुड़ सकती हूँ लॉयनिज्म के साथ में? जी हाँ, कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर कि लायंस संस्था जो है वो एक सेवाभावी कार्य की संस्था है। ये लायंस क्लब जिसे कहा जाता है, ये क्लब कोई अलग प्रकार का क्लब है जिसमें हम समाज की सेवा आपस में मिलजुल करके लायंस के द्वारा हम करते हैं। ये ऐसी जगह नहीं है जहां पर लोग कुछ मौज मस्ती करने के लिए जाएं, लेकिन हमारी संस्था के दो स्तंभ हैं, टू पिलर्स ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन, फेलोशिप एंड प्रोजेक्ट्स। फेलोशिप वो होती है जब लायन मेंबर्स आपस में मिलकर के बैठते हैं, कई सारे सब्जेक्ट्स पर बातचीत करते हैं, एक दूसरे को जान पहचानते हैं ज़्यादा अच्छी तरह से, और उसके बाद समाज के उन ज़रूरतों की बात करते हुए उसके बारे में सब हम लायंस क्या कर सकते हैं उसके ऊपर चर्चा होती है। और इसी द्वारा, इसी फेलोशिप के द्वारा हमारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एक स्वरूप लेते हैं। इसकी शुरुआत कैसे हुई ये भी बताना बहुत ज़रूरी है। सन 1917 की बात है, अमेरिका में एक इंश्योरेंस एजेंट्स का ग्रुप हुआ करता था, जिसमें वो लोग शाम के समय आपस में बैठ करके गपशप वगैरह करते थे, और वो बहुत ही अच्छी तरह से वेल प्लेस्ड ग्रुप था, एक तरह से अपने आप में परिपूर्ण था। दे वर केपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स, देयर फैमिलीज। उन्होंने सोचा कि हमें अपनी कैपेबिलिटी है, क्या हम समाज की सेवा के लिए कुछ कार्य कर सकते हैं। यहाँ से उस थॉट की शुरुआत हुई है। 1917 जून की बात है, और तब मेल्विन जोन्स नाम के उस इंश्योरेंस एजेंट ने इस संस्था की शुरुआत की। वहां से लेकर आज तक ये हमारा 103 साल पूरे हो चुके हैं, 104 साल इस समय चल रहा है। 1956 में लायनिज्म भारत में आया, और आज भारत में बहुत ही सुंदर स्वरूप से इसकी व्यवस्था है। मेंबरशिप के मामले में हम दूसरे नंबर पर हैं, पहले नंबर पर अमेरिका है जहां पर इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन ये कार्यक्रम जो है आज 210 देशों के अंदर चल रहा है, और 48,000 से ज्यादा क्लब है जैसे मैंने बताया। तो ये रहा उसका बेसिस, जिसके बेसिस के ऊपर इस कार्य की शुरुआत हुई। अब सवाल आपने जो पूछा है कि किस तरह से कोई इसमें जुड़ सकता है, तो सबसे पहली बात ये होनी चाहिए कि उस इंसान के अंदर एक सेवा भाव का विचार होना चाहिए, और उस सेवा भाव के विचार से अगर वो समाज के लिए अपनी तरफ से कुछ करना चाहता है, इंडिविजुअली तो हम कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, शांति से कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कलेक्टिवली कोई काम करते हैं तो उसका स्वरूप ज़्यादा व्यापक हो सकता है, ज़्यादा प्रभावशाली हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लायंस क्लब्स जो हैं वो ऐसे मेंबर्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं जो सेवा का विचार रखते हैं। एंड विद दैट ऑब्जेक्टिव, मेंबरशिप ऑफ लायंस ऑर्गेनाइजेशन इज बाय इनविटेशन। इस तरह से नहीं है कि जैसे किसी भी और किसी प्रकार के क्लब के अंदर आप जाएं और वहां की पूछें कितनी फी है और मेंबरशिप फॉर्म भर के वहां पर अपनी फी दे दें और मेंबर बन जाए। नहीं, यहाँ पर ये बहुत ही आवश्यक है कि एक लायन आपको इनवाइट करता है मेंबर बनने के लिए, और आपको समझाता है सारी बातें कि हमारी संस्था का उद्देश्य क्या है। जैसे मैंने कहा, हमारा मोटो है वी सर्व। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जब वो मेंबर अपनी इच्छा प्रकट करता है कि हाँ वो ये काम करने के लिए तैयार है, तन मन और धन तीनों लगा करके समाज की सेवा के लिए वो तैयार है, तब जाकर के उसको लायन की मेंबरशिप मिल सकती है। लायंस की मेंबरशिप की शुरुआत है क्लब। कोई भी मेंबर है वो क्लब का मेंबर बन सकता है, और क्लब जो है वो अंतरराष्ट्रीय संस्था यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से जब कोई लायंस क्लब की मेंबरशिप लेता है तो वो ऑटोमेटिकली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय संस्था का हिस्सा बन जाता है। इस प्रकार से करीब करीब 14 लाख मेंबर आज हमारे संस्था के बन चुके हैं। इस वर्ष जो मेरी जिम्मेदारी है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जीएमटी, ग्लोबल मेंबरशिप टीम, मेरी जिम्मेदारी है हमारी डिस्ट्रिक्ट की बेसिस पर, डिस्ट्रिक्ट की लेवल पर मेंबरशिप को बढ़ाना। जब हम डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, लायंस की डिस्ट्रिक्ट एक अलग ही प्रकार का विस्तार रखती है।
जैसे इसका कोई दूसरी डिस्ट्रिक्ट के साथ कनेक्शन नहीं होता। जैसे कि अगर हम हमारी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो हमारी डिस्ट्रिक्ट कुर्ला से शुरू होती है और सेंट्रल रेलवे में खपोली तक जाती है। उसमें थाना, शाहपुर वगैरह सारी एरियाज आ जाती हैं। भिवंडी, शाहपुर, थाना वो सारे आ जाते हैं। नवी मुंबई आ जाता है, रायगढ़ इलाका आ जाता है। तो इस तरह से ये हमारा जो डिस्ट्रिक्ट बनता है, आज इस डिस्ट्रिक्ट में करीब करीब 97 क्लब्स हैं और हमारी मेंबरशिप संख्या 3,500 के ऊपर है। तो इसकी जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है कि मेंबरशिप का बढ़ावा करना है, तो मेरा एक ही काम है कि हम एग्जिस्टिंग लायंस को प्रोत्साहित करें, उन्हें इस बात से एक तरह का आह्वान करें कि आप नए मेंबर लेकर आइए, और ये मेंबर के थ्रू मेंबर जो बनता है उस हिसाब से हमारी संस्था का विस्तार होता है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आज तो आप मेंबर हैं इसीलिए आप मुझसे यहाँ बात कर रही हैं, लेकिन अगर आप मेंबर नहीं होते और आप मेंबर बनना चाहते, तो क्योंकि लायन श्रीनिवासन आपको जानते हैं तो वो आपको इंट्रोड्यूस करते, और इंट्रोड्यूस करने के बाद हर क्लब की एक अपनी अपनी प्रथा होती है। कई क्लब्स में सिंपल प्रथा है कि आप उनकी रेगुलर मीटिंग अटेंड करें, उनका प्रोजेक्ट अटेंड करें, उनके मेंबर से मिलें, आप अपनी देखें कि उसके अंदर कंफर्ट लेवल किस प्रकार की है। अगर आपको उसमें आसानी लगती है, मज़ा आता है, लोगों से मिलने जुलने का एक मौका जो मिलता है, और किस प्रकार के कार्य लायंस कर रहे हैं, उससे अगर आपको लगता है कि आप उनका साथ दे सकते हैं, तो आप अपनी इच्छा अनुसार लायंस का मेंबर बन सकते हैं। लेकिन इनविटेशन, फर्स्ट पॉइंट इज द इनविटेशन। धन्यवाद सर। और सच में इतना विस्तार पूर्वक सब कुछ जान करके, और शायद जितने भी लोग हमें YouTube पर अभी सुन रहे हैं और बाद में भी सुनने वाले हैं, तो उनको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे वो लोग लॉयनिज्म से कनेक्ट हो सकते हैं। सिर्फ उनको चाहिए एक लॉयन मेंबर उनके आसपास कहीं पर भी, उनके परिवार में, उनके दोस्तों में, या फिर आसपास कहीं पर भी, और बस उन्हीं के माध्यम से वो लोग लॉयन क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं। बस वही है, जैसा कि दीपक सर ने बोला है कि आपके अंदर सेवा भाव होना सबसे ज्यादा जरूरी है। पैसा आपके पास में कितना है कितना नहीं है, या आप बहुत हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग करते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है लॉयनिज्म के साथ में कनेक्ट होने के लिए। बस आपकी इच्छा सेवा भाव जैसी होनी चाहिए। दूसरा, आज सच में हम लोगों को गर्व महसूस होता है जब हम अपने नाम के आगे लॉयन वर्ड लगाते हैं और अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं सोसाइटी में कहीं भी, दैट व्हेन आई से आई एम लॉयन रीना अग्रवाल, इट शोज समथिंग ऐसे ना डिफरेंट, की कुछ सच में मेरे अंदर से शेर जैसा कुछ हिम्मत आ गया है, कुछ मैं कुछ कर सकती हूँ अच्छे से अपने ग्रुप के लिए, नॉट ओनली ग्रुप। यस सर, एग्जैक्टली एग्जैक्टली लाइक दैट ओनली। ये भावना उठती है हमारे दिल के अंदर सच में। जैसे मैंने बोला कि आई एम रीना अग्रवाल, राइट, इट्स जस्ट अ नॉर्मल सेंटेंस, आई एम रीना अग्रवाल। व्हेन आई से आई एम लॉयन रीना अग्रवाल, वो लॉयन का वो ना वो जज्बा एक अंदर आ जाता है, और वहां ऐसा लगता है कि शेर जैसे होते हैं। शेर अपने आप में लीडर होता है, चाहे वो कहीं पर भी हो, वो लीडर की पोस्ट पर है या नहीं है, बट शेर शेर होता है, और शेर हमेशा लीडर होता है। तो आपके अंदर ना अपने आप से एक लीडरशिप वाली भावना जागृत हो जाती है, और आप जब कुछ करने निकलते हैं तो सबको अपने साथ में ले लेते हैं। जहां तक मैं बोल रही हूँ शायद सही है। बिल्कुल दीपक सही सर। है, बिल्कुल सही है रीना जी। अब सवाल ये आएगा कि कोई भी मेंबर अगर हमारा, कोई भी इंसान अगर हमारा मेंबर बनेगा तो उसे पता है कि उसे सेवा तो करनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो ये जरूर सोचेगा कि मैं किसी क्लब को ज्वाइन कर रहा हूँ, किसी संस्था को ज्वाइन कर रहा हूँ, तो उसमें मुझे और क्या मिलेगा। और ये एक वास्तविक सवाल है, एक रिलेवेंट सवाल है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि सेवा, समाज की सेवा लायंस का एक हिस्सा है। आपको क्या मिलता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जो 31 साल से मैं थाने कोपरी का मेंबर हूं, वहां पर जो मैंने कनेक्शंस बनाए हैं, और उस कारण हमारी डिस्ट्रिक्ट के 3,500 लायंस के साथ जो मेरा कनेक्ट है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको यहाँ पर एक तरह से नए दोस्त मिलते हैं, आपको एक तरह से एक्सटेंडेड फैमिली का एक भाव पैदा होता है कि आपके अपने परिवार के अलावा आपके अपने और कुछ मित्र
और कुछ ऐसे एक्सटेंशन कॉन्टैक्ट्स हैं जो आपका एक्सटेंडेड परिवार बन सकते हैं। खुशी के मौके पर इनका साथ होता है, परिवार में अगर कोई परेशानी हो तो भी ये आकर के दौड़ करके खड़े हो जाते हैं, कोई और कठिन समस्या हो तो इनका पूरा सहयोग होता है। हमने देखा है कि कई बार लायंस मित्र की तरह एक दूसरे की जो सपोर्ट करते हैं, या एक अच्छे पड़ोसी का जैसे साथ होता है, इस तरह से जब उन्हें किसी को पता चले कि कोई उनका लायन मित्र परेशानी में है तो वहां पर पहुंच जाते हैं। क्योंकि हमारी संस्था इंटरनेशनल लेवल की संस्था है, तो आप अपने क्लब से, अपने डिस्ट्रिक्ट से भी बढ़कर इंटरनेशनल लेवल तक कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और इसका बेनिफिट जो है आपको तब पता चलता है कि जब फॉर एग्जांपल अगर आप किसी विदेश में हैं और वहां पर भी अगर लायन अवेलेबल है, आपको किसी भी प्रकार की सहायता की जरूरत होती है तो वहां के लोकल लायंस आपको सपोर्ट करते हैं। एंड देयर आर मेनी इंसिडेंट्स इन विच दिस हैज बीन वेरी रिलेवेंटली एक्सपीरियंस्ड, कि जहां पर परेशानी के समय या किसी और प्रकार की किसी को आवश्यकता है, समझ लीजिए आप कोई पहली बार विलायत जा रहा है और उसे वहां के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, तो वो वहां के लायंस उसको सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा और चीज है कि लीडरशिप, आपको एक लीडरशिप अपने आप में डेवलप करने का मौका मिलता है। आप जब क्लब ज्वाइन करते हो तो आपको न सिर्फ वहां पर मेंबरशिप मिलती है, आपको ऐसा मौका मिलता है कि आप ऑफिस बेरर टीम के अंदर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर पार्टिसिपेट करें। क्लब होता है, क्लब को चलाने के सिस्टम्स हैं, और उन चलाने के सिस्टम्स के अंदर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है जिसके ऑफिस बेरर्स होते हैं, क्लब का प्रेसिडेंट होता है, क्लब सेक्रेटरी, क्लब ट्रेजरर। लायंस की संस्था इतनी सिस्टमैटिक आयोजित संस्था है कि जिसमें हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका ज्ञान लेने से हम अपने आप में बहुत ही उन्नति ला सकते हैं। और ये जो उन्नति है, ये जो ग्रोथ है, ये नॉलेज ग्रोथ है, ये पर्सनालिटी ग्रोथ है, ये एक तरह से कई सारी चीजें सीख करके उन्हें अपने कार्य में, अपने प्रोफेशन में, बिजनेस में इम्प्लीमेंट करने का हमें मौका मिलता है। बहुत सारी ऐसी चीजें सीखने को मिलती है क्योंकि संस्था के द्वारा बहुत सारे अलग अलग वक्ताओं को बुला करके उनसे प्रेरणा देने का मौका लिया जाता है। जब वो हमें कई चीजें बताते हैं, जैसे आपने देखा होगा इस साल स्वामी जी को बुलाया गया था, और स्वामी जी ने सेवा से कनेक्टेड उदाहरण देते हुए हमें जिस प्रकार का प्रोत्साहन दिया, ये सचमुच बहुत ही आनंदमय था। तो ये इस तरह की जो सीखने का मौका मिलता है, अपने आप को ग्रो करने का मौका मिलता है, अपने आप में सुधार लाने का मौका मिलता है, ये हमारी लायंस संस्था दे सकती है। जो इससे अच्छी तरह से जुड़ सकता है वो डिसिप्लिन्ड हो जाता है, उसे अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होती है, अपने कार्य के अंदर सुधार लाने की क्षमता आती है, और एक तरह से प्लान करके एग्जीक्यूशन का जब उसे काम करना पड़ता है, जब भी हम प्रोजेक्ट करते हैं तो उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है, उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है, उसके लिए फंड रेजिंग करनी पड़ती है। इन सारी चीज़ों का एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लायन मेंबर को मिलता है। तो ये बेनिफिट्स हैं जो कोई जब संस्था का हिस्सा बनता है तो उसे मिलते हैं। लीडरशिप का एक लैडर बना हुआ है, और वो आप पायदान से पायदान चढ़ते हुए लीडरशिप की लैडर पर आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद अगर आप में क्षमता है तो आप एक बहुत ही स्वाभाविक सीनियर लेवल के ऊपर लीडर बन सकते हैं। ये सारी बेनिफिट्स हमारी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। Sir, I would like to ask you one question. Now, fantastic benefits are there for us. It's a beautiful organization. Still, our membership has not crossed 1.5 lakh, so which we are trying for the last 20 years. 15 lakhs. 15 lakh. 15 lakh. Why? What can be the main reason for that? Well, we have been stuck around 14 lakhs for a while. Okay. There was a time when we reached almost 14.5 lakhs. However, what is important is that people should be willing to understand the basic logic of our organization and then be part of it. The fact is that we have not gone below 13 lakhs for many, many years. We have been at around 14 lakhs for a very long time. I'm sure we will take a step wherein this membership will grow.
Srini, what happens is, considering the fact that this is an organization which is already 100-year-old, so those members who became part of our organization many years ago, many of them would have left the world. Correct. The new people keep joining, but quite a few senior members, unfortunately, are called back from this Mother Earth. So in that situation, the membership number keeps changing. There is a thrust to grow membership. The fact that we have managed to retain the membership despite so many aspects shows that we are continuing to grow. We are continuing to add members. I must tell you, Srini, you will be surprised. This pandemic period, globally, we have had a net growth of more than 30,000 lions in past 4 months, 4.5 months. Fantastic. July is our beginning of the lionistic year. So July, August, September, October, and today we are on 12th of November. Correct. In this period already, there is a net growth of more than 30,000 lions. When I say net growth, there have been dropouts also. There have been several lions who have left this world. But despite that, we have grown by 30,000 plus. Like in our district, we have added 325 plus members already this year. Correct. And there has been a dropout of about 80 due to multiple reasons. And our net growth is somewhere at around 235, 250. It is in that bracket. Some new members have just been added. So we are somewhere around 250 net addition this year. So globally, this membership has grown. I'm sure, if not now, in next few years, we'll be touching 1.5 million, 15 lakh. We have been waiting for so many years to touch that that figure, you know. Achha, despite this problems and pandemic and challenges, still there is a net growth. What can be the reason for that? I can share with you the experience that I have gained as coordinator for GMT. Yeah. As I said, our year begins in July. That's the lionistic year, July to June. Correct. Pandemic began in March. And when pandemic began, initially we were all under a strict lockdown. Correct. We were all at home. But just think about the people who were daily wage earners, daily bread earners. Correct. What happened to them? Those unfortunate people were suffering the most. Correct. People who have money and people who don't have money, those who have to earn every day, for those who have to earn every day was very, very challenging time. Correct. That is where Lions realized that they should do something about such people. And you would know that many clubs in our district, not only in our district, but in many places, started the project to feed these people. Feed. Khichdi project. I mean, simple feed. I mean, prepared food which was distributed by many clubs. In fact, in our district, there was so much of effort which went into this that one of the senior member of our organization in our district, his construction activity, which was at a standstill due to the corona effect, he converted that space into a kitchen to prepare food for distressed people. Every day, about 3,000 people were fed from that kitchen. And like that, there were multiple kitchens which came up. So when that thing happened, the consequence of that, I have seen the benefit in member addition. And how this happened? We have a club in Chembur, which was also very actively involved with this project of feeding the affected people. Yeah. Srinivasan, they have added almost 20 members who joined them because they saw the work which the Lions were doing. And this is the feedback I have received from the concerned president of the club, that it was because of their project to feed the needy people that these people felt, these new Lions felt that they should join the organization. I see that as an important reason for members to join the organization during this period. I understand. Yeah, Lions Kitchen has been sent to international for a photo exhibition contest. Some contest they have sent it because there is a lot of storytelling contest which is there. Yes. So now they have sent the same thing to that. This is what I learned today when I went through some of my
WhatsApp messages. There's Besides something this, out. besides this, COVID-related activities were very efficiently handled. Now, what are the COVID-related activities? You see, again, I'm coming to the people who are not so fortunate and they have rather constraint on their, uh, what to say, on the amount of money which they can spend. So, mask is a cost, sanitizer is a cost. Besides that, all other aspects which are related to pandemic, care and control, everything is a cost. And our people, our lions have done a massive project all over the country and all over our district also, where masks were distributed, sanitizers were distributed. There were other requirements like PPE kits, they were distributed. Oximeters were actually distributed. And in fact, recently we have done a very unique project in which auto rickshaws are supposed to have a divider between the driver and the passenger. So a plastic sheet was handed over to the auto rickshaw drivers, a properly designed sheet which could be properly fixed in the auto rickshaw to create that separation between the driver and the passenger. Now, these are the unique things which Lions have innovated and they have given it to the society as per the need. Though these appear to be small things, but they are very important. And when this project was done during the October Service Week, you should have seen the smile on the faces of all those rickshaw beneficiaries when they received this divider, because unfortunately they belong to a society, part of society where they cannot afford spending even 200, 300, 400 rupees for this kind of a divider sheet. And Lions did it for, I think, over 1,000 auto rickshaws. It was done in various localities. Correct. I see. Actually speaking, we also manufacture N95 in Bangalore, and we have distributed more than 50,000 in South. You know, they're completely. But our cost is a little high. So, you know, that has gone to the municipalities little higher level because it was costing about 80 rupees per mask. So that has gone, but it is beautifully designed with all the precautions. It's the 4-5 layers one. So it was beautifully designed and it is exceedingly well. Good demand was there for that. So now what yes, of course, this pandemic has given problems, but they have given fantastic opportunities also. What I was feeling is that if we continue this, our online meetings, don't you think it will be a leveling our expenses for all the regular meetings, which is that wherever we exceed, we can level it by having a team like this. Don't you feel like that? Well, now I would also like to mention here that there are two aspects that are attached to the financials of a club. We have fundraising or generation of donations or other aspects which is dedicated for projects and activities. Correct. What is known as the charity fund. As far as our own meetings are concerned, we have a separate account and a separate handling of those funds. Correct. Those funds are contributed by way of the club fees by members only, which goes for the purpose of administration. So a member of a club contributes his fees towards the administration. He also contributes whatever his might be for the activities or for the projects. And these two are handled quite distinctly and separately. For the purpose of administration, whatever money is collected, it is used for the club, administrative purposes, which includes the club meetings. It includes the dinner and whatever food expenses or any club-related administrative expense. Correct. And whatever is generated for activities is used solely for the projects and activities. Correct. Where there is a very strict rule, we can transfer fund from administrative account to activity account, but we cannot transfer fund from activity account to administration. This is the strong basis of Lions working as far as funding is concerned.
I must make a point here, Lions Rini, that Lions was adjudged as #1 organization globally, where there were multiple organizations like Melinda Gates Foundation, and various other organizations which participated in that contest. Why did Lions win that? Lions won because the cost of running the organization for Lions was found to be as good as zero. In case of other organizations, whatever fund they have, they use the administrative expense from those funds. In case of Lions, administrative funds are spent by Lions from their pockets. They do not come from the charity funds. That was one of the very important aspects which distinguished us from all other global service organizations. And that is where Lions was found to be #1 organizations in terms of handling of the charity funds, the transparency, the accountability, and the end result of the spending of these monies for the projects. Majority of the projects which have been run by Lions have survived successfully. Many of them are self-sufficient. These are the positive aspects of the projects which are run under Lions. Now, what are these projects? Lions run eye hospitals. Lions run medical support systems. Lions run schools. Lions also run various institutions like where women are taken care of, destitute children are taken care of, and various other organizations in which Lions contribute in their own way. Health is very important, which Lions do. Eye care is another one where we have the eye hospitals also. Lions are doing many cataract and retina related surgeries at either free of cost or low cost. And these are very well known. These projects have been going on very successfully all over the world, and especially in India, there are many such projects. I can tell you that recently, I think yesterday, a full-fledged van was donated to Lions Club of Ulhasnagar. Yes, an ambulance in which it is fully equipped to take care of certain emergencies. Now, it's a very expensive unit which has been handed over to Lions Club of Ulhasnagar for the purpose of taking care of the health-related requirements there. And this is what we call the success of Lions working together, coming together, and serving the society. Actually, Ulhasnagar was not really, but then now off late for the last 2-3 years, they are doing fantastic work. And oh yes, yes. It all depends on the leadership that comes up in the club, and we see that happening in many places. Look at Reena. Look at Reena. She is also doing a fantastic job in as a president of Palm Beach OCEANIC Club. Palm Beach OCEANIC. Yes. So, and look at our friend Srinivasan. He is also a very senior, experienced Lion. Even he, as a president, he's also doing very good work in his own club. So one important factor which always bothers me is that a lot of clubs are there where the administrative accounts fees are not collected from the members. Now, what is the solution for all these things? Well, I think these things might have arisen because we have been not meeting physically. Correct, very right. And when we conduct our meetings over Zoom, which is the case in majority of the clubs now, because members have not met, so there is some gap in collections. Correct. I'm sure this will be taken care of by the respective club leaders to make sure that the fees are collected. Exactly. And the business continues smoothly. Srini, you must identify that during this period, the activities have continued successfully, where members have been contributing their might continuously. In some cases, it may be accumulated funds, but there are a lot of contributions which have come from the members. If I understand correctly, in these 4 months or so, we have already conducted projects of close to 3 crores. Yeah, correct. Altogether. Altogether. Very That's a massive number. Massive number. Exactly. Yes, Reena.
मुझे सिर्फ यहाँ पर ये अपनी तरफ से एक छोटी सी बात बोलनी थी कि जैसे श्रीनिवासन सर ने बोला है कि हमें फीस कलेक्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है या नहीं आ पा रहे हैं क्लब के पास में। वी आर जस्ट लाइक अ फैमिली। बहुत बार ऐसा हो जाता है फैमिली में एक पर्सन नहीं अर्न कर पा रहा है तो बाकी फैमिली उसे संभाल लेती है। तो वही चीज है कि जितना हमारे पास में है, जो हमारे पास में है, हम लोग उससे मैनेज कर पा रहे हैं। तो इसलिए ये ठीक है, इशू है, बट एडमिनिस्ट्रेशन में ना बाकी सर्विसेज तो हम लोग जितना मैक्सिमम कर सकते हैं उससे ज्यादा कर रहे हैं। और सर्विस में कोई भी क्लब मेंबर पीछे नहीं है। बिल्कुल। फ्रेंकली आई एम स्पीकिंग एंड ऑनेस्टली, कोई भी क्लब में आप चले जाइए, हर क्लब अपनी तरीके से बेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। चाहे वो ऑनलाइन सेमिनार्स हैं, अवेयरनेस कैंप्स है, अवेयरनेस सेमिनार्स हैं, या फिर फिजिकल कोई भी एक्टिविटीज हैं। सीरियसली मैं मतलब मुझे बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ है लॉयनिज्म से जुड़े हुए, बट मैंने बचपन से लॉयनिज्म देखा है क्योंकि मेरे चाचा, मेरे फैमिली में मेरे भाई वगैरह सब लोग लॉयनिज्म से जुड़े हुए थे। मैं पिछले 5 साल से लॉयनिज्म में हूँ यहाँ पर। लेकिन जितने एक्टिविटीज ऑनेस्टली मैंने ये पिछले 8 महीने में देखे हैं, मतलब मार्च से लेकर के आज तक में, उतने एक्टिविटीज रेगुलरली रैंडमली शायद हमने नहीं देखे हैं, नहीं किए हैं। क्योंकि जब हम लोग फिजिकल एक्टिविटीज करते थे तब हम लोग भी बाउंड होते थे ना, हर लोग के पास में उतना टाइम नहीं होता था कई बार कि हम लोग हर रोज इकट्ठा हो पा रहे हैं किसी ना किसी एक्टिविटी के लिए। बट nowadays we all can do one activity every day and we all are doing this। आप देखिए हर रोज जूम पर कोई ना कोई मीटिंग है, हर रोज कोई ना कोई सेमिनार है, हर रोज कोई ना कोई अवेयरनेस कैंप है। तो मैं सोचती हूँ कि ये सिचुएशन हम लोगों के लिए अच्छा है कि हम लोग ज्यादा मतलब ना ओपनली सोच पा रहे हैं कुछ और एक्स्ट्रा करने के लिए। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि बंदिशें हमें बांधती तो हैं, लेकिन सिर्फ फिजिकली हमारे दिमाग की सारी खिड़कियां खोल देती हैं और ज्यादा सोचने के लिए कि हम कैसे इस चीज से मतलब इस बुरे समय में भी कैसे अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, और हम लोग सब वही कर रहे हैं। मैं रीना जी ये कहना चाहूँगा, आपने जो समीकरण किया वो बिल्कुल ही रिलेवेंट है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि लायंस ने कम काम किया हो। नहीं नहीं नहीं, फर्क सिर्फ ये हुआ है कि क्योंकि उस समय हम अपने कार्यों में व्यस्त रहते थे तो हम बाकी सब चीजों के ऊपर इतना ध्यान नहीं दे पाते थे। आज हमारे पास इस माध्यम के द्वारा, जूम माध्यम के द्वारा, हमारे पास इंफॉर्मेशन का फ्लो पहले से बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो गया है। और ये जो इम्प्रूवमेंट है जिसके कारण हमें पता चल रहा है कि लायंस काम कर रहे हैं। मैं वही बोलना चाह रही हूँ सर कि हम लोगों ने बहुत काम किया है, हम लोग करते थे हमेशा। लेकिन आज की सिचुएशन में ना हमारे पास में फिजिकल करने वाले फिजिकल हम लोग आज भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा जितने ऑनलाइन चीजें स्टार्ट हुई है ना वो एक्स्ट्रा एड ऑन हो गई है हमारे काम में। बिल्कुल, ये नॉलेज शेयरिंग वाला जो काम हमने जूम पर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जो किया है, नॉलेज शेयरिंग का काम, ये बहुत ही यूजफुल है। इस दौरान हमने देखा है कि कई सारे डॉक्टर्स जिनको हमने सुना है, जिनसे हमने ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स पर सुना है जिसके बारे में हमने कभी पहले सोचा न था, और वो जो नॉलेज शेयरिंग हुई है वो सचमुच ही बहुत ही काम की है। यहाँ मैं एक चीज, अगर हमारे लायन मित्र इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे या उन्हें ये सुनने का मौका मिलेगा, तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि एज अ मेंबरशिप चेयरपर्सन GMT, आई वुड लाइक टू टेल देम दैट देखिए, हम लायंस काम बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन ये समाचार हमारे समाज तक, हमारे दोस्तों तक, मित्रों तक, हमारे परिवार के एक्सटेंशन में, हमारे बिजनेस में, हमारे कॉन्टैक्ट्स में अगर इसके बारे में हम ये समाचार देते हैं, इसका जिक्र करते हैं, उसका लाभ हमें ये मिलेगा कि कई ऐसे लोग जो हमारे कार्यों के बारे में नहीं जानते हैं, ये जानने के बाद हो सकता है वे कंसीडर करें कि वो हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करें। मैंने कहा है, अभी हाल में मुझे मौका मिला था लगभग डिस्ट्रिक्ट के सारे क्लब लीडर से बात करने का, और कुल मिलाकर के मैंने 8 मीटिंग इस प्रकार की 7 दिनों में अटेंड करी। और उन 8 मीटिंग में मैंने यही कहा कि प्लीज कम्युनिकेट अबाउट द प्रोजेक्ट्स विच योर क्लब इज कैरिंग ऑन अंडर द लायंस बैनर। Spread the information to the society, to your friends, to your business contacts, to your relations, to your acquaintances, so they get inspired to join our organization.
अगर ऐसा करने से हमारी मेंबरशिप की संख्या बढ़ सकती है तो इसका लाभ हमें मिलेगा, क्योंकि द मोर नंबर ऑफ हैंड्स वी हैव, more services we will be able to do, the more contributions we will be able to receive, और उसका जो अल्टीमेटली लाभ होगा समाज के उस हिस्से को होगा जिसे इस चीजों की आवश्यकता है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी संस्था को ज्वाइन करें, ये हम सभी की एक एफर्ट होनी चाहिए। इसके लिए कुछ चीजें जो हमें करनी है क्लब लेवल के ऊपर, उसका सही प्रकार से उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ही लाभदायक होगा। हम जो अपने कार्यक्रम करते हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स करते हैं, वो बिल्कुल सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज करके करते हैं, और उनका जो नतीजा हमें मिलेगा वो हमारे लिए बेनिफिट होगा। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। हेलेन केलर का नाम हम सभी जानते हैं। हेलेन केलर की एसोसिएशन लायंस के साथ बहुत ही मुख्य है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसका रिलेवेंस मैं आपको बताना चाहूँगा। और ये घटना आज से करीब 95 साल पहले की है। आई एम टॉकिंग ऑफ द ईयर 1925. Helen Keller, as many of us know that she was having sight deficiency. उस समय लायंस साइट के लिए काम करते थे। हेलेन केलर ने लायंस के काम को देखते हुए एक उपाधि दी लायंस को, द नाइट्स ऑफ ब्लाइंड। और ये नाइट्स ऑफ ब्लाइंड की उपाधि हमारे लायंस के लिए एक ऐसा उपहार है जो कार्य साइट फर्स्ट के लिए हम आज तक कर रहे हैं। क्या करते हैं हम साइट फर्स्ट में? सिर्फ आई साइट चेक करके चश्मे वितरित करना, ये तो एक बहुत ही एक स्टार्टिंग लेवल का काम हमारा है, जो हम स्कूल में, आजकल क्या हुआ है कि छोटे बच्चों को भी चश्मे की जरूरत पड़ने लगी है। तो ऐसे ऐसे इलाकों में जहाँ पर परिवारों की इतनी इनकम नहीं है कि वो बच्चे की तरफ ध्यान दे पाएं, तो हम उन लोगों के लिए ये कार्य करते हैं, बट ये बेसिक काम है। लेकिन इस दौरान जब हम कम्युनिटी के लिए ये काम करते हैं, और उसमें जब अगर हमें कैटरेक्ट मिलता है या रेटिना के प्रॉब्लम मिलते हैं या किसी और प्रकार का आंखों से जुड़ा हुआ कोई भी कार्यक्रम मिलता है, तो हम उस प्रोजेक्ट को भी पूरा करते हैं। ये सारी चीजें करने के पीछे एक जो बेसिक फंडामेंटल स्ट्रेंथ है, नाइट्स ऑफ द ब्लाइंड का जो हमें उपाधि मिली थी, उसको ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को हमने बहुत ऊंचा उठाया। एक और प्रोजेक्ट है हमारा जो स्कूल के बच्चों के लिए हम करते हैं, पीस पोस्टर कॉन्टेस्ट। संसार भर के अंदर एक तरह से पीस की बहुत आवश्यकता है। परेशानियां जो बढ़ रही हैं, जो तनाव बढ़ रहा है, उसकी वजह से पीस इज डिस्टर्ब्ड। लायंस ने रिकॉग्नाइज किया कि अगर छोटे बच्चों को समझाया जाए कि पीस इज सो इम्पॉर्टेंट, उस चीज को ध्यान में रखते हुए एक पीस पोस्टर कॉन्टेस्ट होता है। इस पीस पोस्टर कॉन्टेस्ट के द्वारा 13 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को पेंटिंग के द्वारा अपने विचार व्यक्त करने का मौका मिलता है। और इस कंपटीशन के द्वारा जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर चलती है, इसमें इंटरनेशनल से पोस्टर सिलेक्ट किए जाते हैं, और उस बच्चे को और उसके परिवार के मेंबर को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में इनवाइट किया जाता है, और वहाँ उनका सम्मान किया जाता है। इसके अलावा हर क्लब लेवल पर, जो भी क्लब ये प्रोजेक्ट करता है, वो क्लब लेवल पर जितने बच्चे इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करते हैं, उनमें से बेस्ट पोस्टर्स को सिलेक्ट किया जाता है, और उनको प्रोत्साहित किया जाता है किसी न किसी तरह का, उन्हें इनाम देकर, अवार्ड देकर या रिवॉर्ड देकर। मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा जो एक तरह से मेरे क्लब से एक इनिशिएट हुई है। हमारा क्लब भी पीस पोस्टर कॉन्टेस्ट में रेगुलरली पार्टिसिपेट करता है, और हमारे एक मेंबर लायन कनेकर, उन्होंने बहुत ही एक अनोखा काम करके दिखाया जब वो पीस पोस्टर के चेयरपर्सन थे। पीस पोस्टर कार्यक्रम जो किया, बहुत सारे पोस्टर हमारे पास आए। उसके बाद उन्होंने एक प्रदर्शनी लगाई एक हॉल में, और उस प्रदर्शनी के द्वारा वो करीब 100-125 पोस्टर्स जो हमने इकट्ठे किए थे, वो वहां पर डिस्प्ले में रखे गए। 2 दिन के कार्यक्रम में थाना एरिया के जो
पार्टिसिपेंट्स थे, उनके पेरेंट्स और उनके मित्र, उनके रिश्तेदार, उनके पड़ोसी वगैरह आकर के, और समाज के लिए ये ओपन कर दिया गया, जहां पर बहुत सारे लोग आकर के उस प्रदर्शनी को देखकर गए कि किस प्रकार से लायंस ये काम करते हैं। आज मेरे ख्याल से 6ठा या 7वां साल है, हम लगातार ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं। नॉट ओनली पीस पोस्टर बट उसकी गैलरी में डिस्प्ले करने का कार्यक्रम। पीस पोस्टर तो 1996-97 से हमारे यहाँ पर शुरू हुआ था, और तब से लेकर के अभी तक हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन अभी हम उसको डिस्प्ले भी करते हैं। ये इस प्रकार के अनोखे कुछ कार्यक्रम जो होते हैं लायंस के द्वारा, ये हमें बहुत ही प्रोत्साहित करते हैं। Lastly, one question I would like to ask. I mean, do you remember anything very memorable which you can, share with our members internationally or nationally in Lionism? You mean my experience? Yeah, your experience. I can share with you maybe a couple of incidents. I hope we have time. I hope we are not exceeding. We have got all the time to listen to you. Thank you so much. I was president in the year 1996-97. And I will go back to the subject of sight first. Our club had been doing cataract surgeries in Murbad area. And that time the cataract surgeries were of a different kind. That cataract surgery involved removal of the cataract from the eye in the traditional manner. Not like today when we are inserting the lenses, and through laser it is done. We were doing it in Murbad, where people from remote villages adjacent to Murbad used to come for their eye problems. Many of them were very elderly, and we used to hold a 5-day camp there. Screening, giving them proper checkup, preparation, all the kind of a preparation, and then the cataract operation, and then 2 days rest. So the concerned member and one of his family member, they were taken care of for 5 days, including the stay and food and everything. Correct. And we used to create a kind of a hospital condition in Murbad with the support of local management there. Expenses were all borne by Lions. We had some volunteer doctors who used to support our activity. So all this cataract operation was happening in the traditional manner. And incidentally, during that particular year in 96, again, here our senior Lion Omiji, he had got the idea of using the IOL. It was just the inception of the IOL at that time. And we started this. And I remember that during the last 4 months of my tenure, our tenure is normally 1 year. In February, I launched this program to do 200 cataract surgeries through IOL. And that project was completed. I cherish that forever because that was a unique first time that such a project was conducted through our club for cataract. Due to certain reasons, I could do 120 operations in my tenure, and the 80 lenses which were already procured were passed on to the subsequent team. This was done at Chhatrapati Shivaji Hospital in Kalwe. And certainly it was a kind of a moral boosting activity for me personally, because the most important part is that many of my friends contributed towards procurement of these lenses, the cost of procurement of these lenses. When I shared this project with them, they contributed willingly. That added to the happiness. That's right. And actually, I remember, in that period, like Rajnikant Shah, when he was a Sight First chairman, he had gone to at least about 55 villages. I was a zone chairman at that time. So our zone full had gone there. So we also remember that activity very much. So Rajnibai Shah was the district governor during the time when I was the club president. Okay. And I was a zone chairman when he was a Sight First chairman. Okay, that was 2 years prior to that. Yeah, 2 years prior. The other aspect I would recall is when I attended for the first time the international convention in Chicago 3 years ago. What a sight and what an experience.
The precision with which the programs were organized at the international level, where multitude of lions from across the globe participate. A huge hall where at one time thousands of lions are sitting together and listening to the leaders. No interruption, systematic, organized, and attentive participation of everybody who was present in that massive auditorium. The scale at which that was organized was phenomenal. I must tell you, precision probably will be short in describing the manner in which that whole event was executed. There was so much to learn from that event. I can never forget. Lions organize a parade, and parade is participated by all the participating countries. They come in the beautiful attire of their respective countries, and some of them were exceptionally good. The total path of the parade is almost few kilometers, and people walk, and these people in the parade, people standing on the side to watch them, is a treat to really witness and experience. There are many other aspects, but I would like to narrate these two because we have limitation on the timing. Correct. And secondly, one thing I hope that the same precision is maintained after 2 years when it is conducted in India, which is scheduled in India. 2022 is India's turn to host the Lions International Convention. Correct. Yeah, we have our country has given 3 international presidents so far. Correct. Lion Rohit Mehta, Lion Ashok Mehta, and Lion Naresh Agrawal. And I'm sure we will have many such opportunities to provide leadership at the international level. I know. Actually, Deepak bhai, I got so many questions to ask, but unfortunately, with the time, paucity of time, I think after some time we'll have one more interaction with this. I will love to do it, provided you restrict it only to membership. Yeah. I think we have our membership. We have really devoted a lot of time to it, and which is very important also. I mean, people should know, people should realize it's very important now. And I would like to just add quickly. Give me 2 minutes. Yeah. Our first Vice District Governor, Lion Lunkaran Tavriji, has announced Vision 5000 plan. Now, what is this Vision 5000 plan? We are currently at around 3,500 odd number of members. Lion Tavriji has given us a target to reach membership of 5,000 by June 2021. We have to add approximately 1,500 members during this period. This is the task which is in front of us. Each Lion member is responsible to contribute towards achieving this objective. Through this medium, I take an opportunity to request all club leaders to please join hands in making this possible. And let us all work together to fulfill the dream of our first Vice District Governor to take our district membership to 5,000 as soon as possible. For this, we have not only to add members, but we have also to ensure that the existing membership is retained intact. So retention is a very important part of membership. Growth is one, but if we have issues on the retention, our total net number does not grow much. We have to focus on retention. Back door should be closed. Exit door should be closed. Exit door. So the door should open only one direction. Entry. Direction. Yeah, that is what we should do. We should try our best to add members in our clubs. We should try and promote new clubs in areas where there is a need. Because I will only repeat, where there is a need, there is a lion. Thank you. Thank you very much, Deepak ji, for having an interesting, innovative, and actually knowledgeable interaction which we had today, especially in membership. And I'm sure people who hear this, they will all will be geared. We only need one more extra member from each member. That's all. I mean, it is as easy as that. But then people target is 7,000. Yes, definitely, sir. मुझे यहाँ पर एक छोटा सा correction करना है.
करेक्शन ऐसा है, मैंने बहुत पहले एक अपना लीडरशिप सेमिनार अटेंड किया था अपने लॉयनिज्म में ही, आनंद सर ने उस टाइम पर लीड किया था हम लोगों को। उनका एक बात मुझे हमेशा याद रहता है जब से मैंने वो सेंटेंस सुना है, व्हेन वी से वी विल ट्राई, ओके वी विल ट्राई, मतलब नहीं होने के 0.0001% चांसेस है जहां पर हम ये बोल सकते हैं हमने तो कोशिश किया था बट नहीं हुआ। Okay, so instead of this we will try, we have to use we do. Yes. Okay, so we will not try, we won't try, we will means we do only. This sentence is for us. तो थैंक यू वेरी मच सर। उम्मीद करती हूँ जितना कुछ दीपक सर ने हमें बताया है उतना कुछ सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में अपनी हर चीज को हम सबके सामने रखा है। लॉयनिज्म से जुड़ी हुई बातें हो, लॉयंस के प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई बातें हो या मेंबरशिप से जुड़ी हुई बातें हो, हर टास्क को उन्होंने हमारे सामने बहुत अच्छे से, बहुत साधारण सी भाषा में हम सबके सामने रखी है। तो उम्मीद कर रही हूँ जितने भी लोग इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं या बाद में भी इसे सुनने वाले हैं, उन सबके सामने लॉयनिज्म की पिक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और जितने भी लोग जो लॉयनिज्म से अभी तक जुड़े हुए नहीं हैं, उन सबसे हमारी यही अपील है, आइए देखिए समझिए कि लॉयन क्या है और यहाँ पर हम क्या और कैसे करते हैं। और आपके अंदर थोड़ा सा भी सेवा भावना अगर है तो प्लीज हमारे साथ में कनेक्ट होइए, जुड़िए, लॉयन मेंबर बनिए और फिर महसूस कीजिए उस गर्व को, जिस गर्व को आज हम सब महसूस करते हैं लॉयन मेंबर बनने के बाद में। थैंक यू वेरी मच दीपक सर। और मैं एक और उम्मीद रखती हूँ दीपक सर के साथ में कि हम लोग और एक ऐसा ही सेमिनार रखेंगे, एक टॉक शो रखेंगे जहां पर आपको फिर से आना है, क्योंकि अभी बहुत सारा कुछ जानना बाकी है आपसे। Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, Reena ji. Thank you, Lion Srini. Pleasure all mine. Thank you so much. ध्यान रखिए सब लोग अपना, अच्छे से रहिए। Thank you. Happy Diwali. Happy Diwali. Greetings of the season to everybody. Same to you. Same to you. Thank you very much.